If given a chance on any day, would you like to code or do a sales pitch? ये तो धर्म संकट में डाल रहे हो. Hello, and welcome to another episode of TheVShow. In today's episode, we talk about InterviewVector, which is a platform which helps companies hire faster and better by conducting interviews on their behalf. So basically, hiring हर company की एक critical problem होती है, and especially tech hiring is a relatively difficult one. So InterviewVector आपकी कंपनी को इंटरव्यूज प्रोवाइड करती हैं जो आपके टैलेंट पूल को इंटरव्यू करता है and आपके हायरिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाता है. And we speak to Sachin today, who is the co-founder of InterviewVector, and learn about his journey, how he has transitioned from being a techie to now running the whole startup, and his experiences of building a startup. This is one of the most candid conversations I have had, and it is a lot of fun. So you should definitely check it out. Also, don't forget to hit the subscribe button so that you don't miss on any further updates from this channel. Let's dive in. I would love to understand more about InterviewVector and how it's shaped up and what's the current mission looking like. At InterviewVector, our aim is to make hiring simpler. But we started with a very small part of it. We started with tech hiring, and क्योंकि I was a techie, तो realize हुआ कि पहले खुद को आता है उसको solve कर लेते हैं, फिर नई चीजें सीखेंगे और फिर वहाँ पे solve करेंगे, right? And in tech hiring as well, we started with a very small, I would say, sub part or subtopic, which is evaluation. So, and in evaluation, we started with interview as a service, where our core product was interview as a service. So it was more like a Uber for interviews kind of a model where we started, where companies can outsource their interviews to professionals on our platform, and these professionals are verified by interview and our team interviews on our customers' behalf with their, I would say, the process set up by them and the standard set up by them. So that's what we started with. We have built more products and we have evolved into much more things now. But yeah, that's the core idea that we started with. Got it. And yeah, आप तो techie थे and you were in our research, right? Of course, building products over there. ये चमका कैसे? मतलब how did you land up on the problem statement? I think काफी clear था. I have always been on both the sides of the table. जब टावर में गए थे तो I had to give 9 interview rounds. One was a hacker test, and then 8 were 2 were telephonic interviews, then 6 were on-site interviews. Campus में भी बाकी कंपनीज के लिए भी interviews थे. Tower was a off campus one, and वहाँ पे off campus उन्होंने ले ली थी, to be honest, right? उसके बाद टावर में आया, तब I became a panel member. टावर में जनरली फर्स्ट ईयर से आप स्टार्टिंग से इंटरव्यूज देना शुरू कर देते थे, सब कुछ करा क्योंकि टीम छोटी थी. Correct. तो हमेशा हम कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट कर रहे थे, कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले रहे होते थे, एंड रियलाइज कि वहां पे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब दे आर कमिंग टू इंटरव्यूज एंड दे आर नॉट गुड. एंड टू बी ऑनेस्ट, एवरी अदर इंजीनियर यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम इंटरव्यूज, राइट? मतलब काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने इंटरव्यूज अपने टीममेट्स को लास्ट मिनट में दे दी कि यार मैं नहीं ले पा रहा, तू ले ले. लास्ट मिनट पे या काफी बार वो हमें दे देते थे कि यार मैं नहीं ले पा रहा, तू ले ले, राइट? स्वैपिंग तो चलती रहती है. स्वैपिंग चलता रहता था. काम है, तुम कर लो. तो कोई भी एंजॉय नहीं करता था, बट दैट वाज अ कोर पार्ट ऑफ इट. एंड वन ऑफ द रीजंस एंजॉय किस लिए नहीं करते थे, क्योंकि यार अच्छे बंदे से बात करने में ना मजा आता है. यू वुड वांट टू स्पेंड 2 more hours with that person. On the other hand, if you're talking to a person who is not good, यार मजा नहीं आता, to be honest. I have seen people जो इंटरव्यूज में आते हैं एंड वो ये कहते हैं कि I'll give you a real example. जब हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो I was doing a, I would say, POC for a customer. भारत पे के साथ कर रहे थे हम. विजय अग्रवाल उनके उस समय CTO थे, एंड उन्होंने कहा कि यार सचिन एक काम कर, तू शेडो कर, मैं इंटरव्यू लेता हूँ. कि ठीक है मैं शेडो करता हूँ. एंड दैट वाज द फाइनल राउंड विद विजय. यार कैंडिडेट को विजय ने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल. ही वाज अ वेरी जूनियर कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट, एक साल का एक्सपीरियंस होगा. एंड विजय ने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया कि यार एक एरे में कुछ करना था, लेट्स से सॉर्टिंग करनी थी, कुछ करना था. एंड दैट कैंडिडेट सेड कि मैं एरे को पूरा ट्रैवर्स करूंगा एंड उसको ट्रैवल करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, that would be log of n. Okay. Logarithmic of n. तो विजय कहते हैं यार तू कम से कम एरे में अगर मान लो एरे में 10 बॉल्स रखी हैं या 10 बॉक्सेस हैं, तो तुम 10 बॉक्सेस एक बार तो विजिट करोगे. अगर तुम ट्रैवर्स कर रहे हो तो ऑर्डर एन तो आ ही गया. एंड दैट गाय वाज लाइक नहीं, ऑर्डर लॉग एन आ रहा है. तो यार वहां से realize होगी. And Vijay was like frustrated after that interview, and that same happened with me when I was at Tower. When I was at Eightfold, it was again happening at that point of time as well. And even from a candidate point of view, if I was going for an interview at some company, वहां पे भी काफी frustrating experience होता था काफी बार, क्योंकि interviewers अच्छे नहीं होते थे.
they used to be like कि इंटरव्यू में 2 मिनट आएंगे, एक क्वेश्चन देंगे, गायब हो जाएंगे, 50 मिनट बाद वापस आएंगे, राइट? तो doing for the sake of it. हाँ, डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, राइट? एक्सपीरियंस काफी ब्रोकन था हर जगह पे, दोनों जगह। दैट्स वेयर वी रियलाइज कि ये काफी ब्रोकन है, दोबारा जॉब ढूंढने से बेटर व्हाई नॉट स्टार्ट दिस, बाकियों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? सो Got दैट्स it. हाउ वी स्टार्टेड। नहीं यार, and I'm always so inspired and excited by the way you being a core techie, the way there is so many stereotypes around being a techie, right? कि यार अच्छा कोई techie है तो CTO ही बनेगा, कोई techie है तो यार तू tech वाली चीजें ही दे। But I think your direct migration has been कि अच्छा I was doing tech, I was liking core, so now I'm doing core hardcore sales and I'm pitching clients. I remember the times when we were also talking and when you were pitching InterviewVector, right? So tell me about that journey. I'm sure whenever we transition to a new role, I personally feel that everything can be figured out if you have the right intent and you give enough time and focus, right? And clearly you are an exhibit there, right? From being a hardcore techie to now doing the hardcore sales and being like the face of InterviewVector everywhere, be it LinkedIn, be it offline, be it anywhere else, right? Tell me more about that journey of yours and how do you find it? Yeah, I think life took a 180-degree switch when I decided to be in sales, right? Correct. काफी ज्यादा ट्रांजिशन था, बट इवन व्हेन आई वाज इन टेक एंड राइट नाउ आई एम इन सेल्स, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये था कि इम्पैक्ट कितना आता है। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जब मैं टावर में था ना, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल वर्क दैट आई माइट हैव डन एट टावर वाज प्रोबब्ली राइटिंग अ कॉन्फ्रेंस पेज। सो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया था एंड प्रोडक्ट ना, उसमें ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, द प्रोडक्ट वाज नॉट स्केलिंग अप फॉर देम एंड दे वर लाइक नॉट हैप्पी। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो मेरी टीम, मैं उस टीम का पार्ट था, एंड वी रियलाइज कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, और इसको ठीक करने में हमने एस्टिमेट किया कि यार इसको ठीक करेंगे तो कम से कम 1.5 महीना 2 महीने तो लग जाएगा, क्योंकि पहले साला डिबग भी करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, प्रोडक्शन में टेस्ट करना है, 4 बार टेस्ट करना, मतलब 4 बार टेस्ट करना, फिर प्रोडक्शन में जाएगा, फिर कुछ इश्यूज आ जाएंगे, एंड आई देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार लाइफ में चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उस समय ना ये देखा था कि लोगों की एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, और देखा कि उनको प्रोडक्ट यूज करने नहीं आता था। तो मेरे लिए हमेशा इम्पैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड जैसे हमने वो कॉन्फ्रेंस पेज लिखा, अगले दिन ना मेरे को मेल, मेरे मैनेजर को मेल्स लिख आ गए हमारी इंटरनल टीम्स के, जो ग्लोबल डिवीजन मैनेजर था, कि यार सचिन कौन सा सही, सचिन कौन है, कौन लौंडा है यार, इसने तो बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस पेज लिखा है, बढ़िया चल रहा है हमारा प्रोडक्ट। एक दिन पहले तो गालियां आ रही थी, अगले दिन एकदम तारीफ करने लगी। तो यार वो मेरे को काफी चमका कि यार इम्पैक्ट इज व्हाट मैटर्स। एंड व्हेन आई स्विच टू फ्रॉम इंजीनियरिंग टू सेल्स, तो मेरे लिए एक चीज क्लियर थी कि यार कि क्या मैं इम्पैक्ट मार सकता हूँ। इफ आई कैन मेक अ इम्पैक्ट विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, मोर देन हैप्पी। तो वहां से मतलब मुझे, आई नेवर मिस्ड आउट ऑन टेक, क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल काम मैं कर रहा हूँ। लाइफ काफी चेंज हो गई, सो हार्डकोर टेक से हार्डकोर सेल्स आ गए। आई थिंक थोड़ा नेचर, आई थिंक बकचोदी का नेचर है मेरा, तो आई एम अ लॉट मोर, यू रियलाइज आई एम अ लॉट मोर टॉकेटिव, राइट? एक नर्ड इंट्रोवर्ट टेकी की तरह नहीं हूँ मैं। So I was never that kind of a You guy. are not the stereotypical स्टीरियोटाइप techie. नर्ड, चश्मा पहन के साइड में बुक्स लेके बैठे होंगे, अपना आईपैड लेके बैठे होंगे, किंडल लेके बैठे होंगे, वो नहीं हूँ मैं। तो आई Correct. ऑलवेज लाइक कि दोस्तों में रहता था, सब कुछ रहता था। जब आईवी स्टार्ट भी किया, तो हम देख रहे थे यार कि देखो प्रोडक्ट तो बना लेंगे, हर कोई बना लेगा हम में से, क्योंकि वी आर ऑल गुड फोक्स, राइट? आशीष वाज इज ऑसम टेकी, और जो बाकी लोग भी थे जो सपोर्ट करते उस समय। बट रियलाइज किया सेल्स नहीं होगी तो चलेगा क्या? तो हमने कहा कि चलो सब लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किसका चलता है। उस समय फिर मतलब आशीष ने भी रीच किए, मैंने भी रीच किए, और कुछ दोस्त थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी रीच किए। अपेरेंटली मेरी चीजें चल पड़ी, फिर कहा कि चलो यार अगर मेरी चीज लोगों को समझ आ रही है तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फिर हमारा काफी बड़ा डिस्कशन हुआ कि सचिन तो टेक से सेल्स में जा रहा है, करियर स्टेबल होगा कि नहीं होगा। वो भी क्वेश्चन चल रहे थे, घर में क्वेश्चन चल रहे थे, वो तो घर में डिस्कशन चल रही थी। फिर अलग दोस्त अलग एडवाइस कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, राइट? तो आई थिंक ये काफी सारी चीजें रही हैं उस समय। बट यार आई डू एंजॉय सेल्स, आई थिंक आई डू एंजॉय मीटिंग पीपल, I do enjoy building my network, and the final thing, that the most important thing that I enjoy is making an impact on their lives and they coming back. How do you scale yourself? So basically, when you are building or when you are starting up a company, there are different phases, right? There is a 0 to 1 phase where you were doing reach outs and you were directly meeting people. But of course, that is when you go from 1 to 10 or 10 to 100 wala phase, you will need more people to replicate what you are doing, or to give you that extra push. So how do you scale yourself? I think scale has 2 parts. One is a people's part, the other is a tech part. People's में ही processes आ जाते हैं काफी, ठीक है?
तो जो पीपल पार्ट है वो स्टार्टिंग में मतलब जनरली फॉर एनी फाउंडर स्टार्टिंग में कोई भी नया बात होता है तो उसको पहले खुद समझना होता है क्योंकि he or she has the most context to what the product And is. they have to set up the they, right they have to set up the example. set up the right example. तो पहले हमने स्टार्टिंग में सारी चीजें मैनुअली खुद से करी थी मतलब कुछ एक महीने हमने खुद से करके देखा क्या क्या इश्यूज आते हैं क्या क्या नहीं आते हैं उसके बाद देन वी ब्रॉट इन अ टीम उनको समझाया आई रिमेम्बर टीम इतनी मतलब बच्चे बचकानी गलतियां करते थे स्टार्टिंग में ना जब पहली बार मैनेजर बनते हो फाउंडर बनते हो तो टेम्परामेंट भी बहुत कम होता है तो तब लड़ाई हो जाती थी तो टीम की मेरे से लड़ाई होती थी वो हम लड़ाई कर रहे थे फिर धीरे धीरे वो चीजें सॉल्व होने लगी एंड बहुत ही जो बचकानी चीजें वो खत्म होने लगी ओवर द पीरियड टाइम टेक भी हमने बिल्ड करना शुरू किया कि वी रियलाइज कि यार टीम कुड स्पेंड बेटर टाइम ऑन बेटर थिंग्स रादर देन डूइंग दिस मैनुअल थिंग्स तो वो किया अब 2 साल हो गए फिर रियलाइज किया कि पहले क्या होता था जर्नलिस्ट होते थे हमारे पास काफी ज्यादा जो स्टार्टिंग में जर्नलिस्ट थे कि एक बंदा 4 चीजें करता 5 चीजें करता आई थिंक लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने स्पेशलिस्ट टीम बनानी शुरू करी कि हर एक अलग अलग एक छोटा सा पार्ट लिया और 2 लोग उसको करेंगे 3 लोग उसको करेंगे ओवर द पीरियड टाइम इनका एक सब मैनेजर होगा फिर एक ऊपर मैनेजर होगा आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आउट द ऑपरेशंस पार्ट Similarly, for sales part, that is something that we had to solve for that. For example, till अभी भी majorly sales मैं ही कर रहा हूँ, and that is the problem that we are right now solving. कि if we want to grow to the next level, we need to have a sales team. Similar reach out team जो कि interviews को लेके आती है, training team जो कि interviews को train करती है, quality team जो कि चीजें check करती है. तो we started to create pods. That's with the core product. And on the other hand, tech team इन चीजों को स्केल कर रही है कि जैसे हमने काफी सारी चीजें क्वालिटी का हमारा एक पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है इंटरनली कि क्वालिटी की जो चीजें धीरे धीरे नई नई चीजें आती रहेगी ये चीजें इश्यूज आ रही है ये चीजें इश्यूज आ रहे हैं हमने उसको प्रोडक्ट में डालना शुरू कर दिया कि इसको प्रोडक्ट से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि टीम को भी बहुत ही ईजी रहे तो आई थिंक टेक ने एनेबलमेंट काफी ज्यादा करी है ऐसा नहीं था कि चीजें मैनुअली नहीं की जा सकती थी बट जो चीजें हम पहले हमारी टीम दिन में सिर्फ 2 ही चीजें कर पाती थी इस समय वो कम से कम 50 चीजें कर रही है That's how tech has played a part and creating processes, creating mini boards has solved a problem. Got it. Cool. I think my next question, and which I'm very curious about right now, what do you think is happening in the tech hiring space right now? How is the market? Because I can see it, of course, from a macro level and from what, let's say, particularly in my company, we have learned or we have seen. But how is the general market? What's the impact, and how are you being resilient to that? So yeah, I think market काफी interesting चल रहा है इस समय. To be honest, talent की demand कहीं नहीं गई है. To be honest, being very honest, there came a time, I think last year के starting में या उससे पहले वाला साल, there came a time जब हर किसी को लग रहा था कि अगर हम 1000 टेकीज हायर नहीं करेंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी. And even techies were feeling that privilege कि मेरे को X का ऑफर है तो 3X पे ही जाना है. Right now यार ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कहे कि मेरे को if the company is not doing really bad, almost every company is hiring even right now. It's just that कि अब उन्होंने बार हायर कर दिया अपना स्टैंडर्ड हायर कर दिया. Rather than hiring 100 people, they are probably hiring 3 people or 4 people. जो कि requirement. Obviously, in a normal market, they would have loved to hire 10 people or 15 people, but right now they are hiring for 4 or 5 people. But everyone is focusing more on quality rather than quantity. And जितने भी कंपनीज में अगर आप देखो ना फायरिंग हुई है काफी सारी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे आई वुड से कि जहाँ पे फाइनेंशियल्स के इश्यूज थे काफी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फाइनेंशियल्स के इश्यूज थे तो उनको करना पड़ा ले ऑफ करना पड़ा एवरीथिंग बट काफी सारी कंपनीज ने परफॉर्मेंस बेस्ड फायरिंग भी करी है ठीक है even then you would see these companies similar companies again hiring back after 1 month or 2 months or 15 days so it's more like they are trying to increase the bar तो talent के लिए मुझे लगता है कि यार लोगों के लिए it is the right time to upskill themselves train themselves prepare themselves I think if they are preparing themselves and whoever is taking this time to prepare they can land again a better opportunity क्योंकि आप बताओ ना मार्केट में काम करो भी इंस्टा हर खोलो या लेट्स से लिंक्डइन खोलो जॉब्स में भी 100,000 मिल जाएंगी तुम्हें basically what you're trying to say is कि यार if you're talented enough you will find your way you will find your way obviously I think मार्केट में ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि सैलरीज उतनी ज्यादा ना हो जितनी what you're expecting reason everyone has right now limited cash तो यार आपकी जर्नी रही है कि you were working in Kabul then it's like a MNC you were working in then you moved into a startup figured out and got a hang of the startup ecosystem and then eventually ended up starting up on your own right how do you feel about your personal journey let's say what are the
top 3 learnings which you have after starting up? After starting up, I think 2 learnings मैंने अभी डाली थी, LinkedIn पे डाली थी. तो 2 तो वही है for sure. The first one is a lot can happen over tea, a cup of tea, Or a coffee? or a coffee, or something else as well. Okay. Got it. Second was pricing should never be a mode. I think I like this one more. काफी सारी कंपनीज होती हैं कि वो करती है कि बस लोअर प्राइसिंग पिच करती है rather than building the right product or building the quality, they pitch the lower pricing. 2 नुकसान होते हैं. आई थिंक एक तो मार्केट खराब होता है, मार्केट का ओवरऑल टाइम नीचे गिर रहा है, कस्टमर को आदत वही लग रही है तो वो हर बार वही मांगेगा कि मेरे को ये प्राइस चाहिए, ये प्राइस चाहिए. तो that's not how things work. एंड आप अपने प्रॉफिट्स घटा रहे हो, आप अपनी खुद ही मर जाओगे. मतलब पीपल हैव रियलाइज्ड नाउ राइट कि बर्निंग कैश इज नॉट द सॉल्यूशन. Correct. I would say third is build things which are not scalable. I think उसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी कहूंगा. I think build things after you have sold them. मतलब पहले बनाओ. अगर मैं हिंदी में बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो काफी सारे लोग मतलब काफी सारे आइडियाज पे ये एप्लीकेबल होता है. काफी सारे आइडियाज पे मतलब ऑब्वियसली अगर आप डीप टेक पे चले जाओगे, उन पे चले जाओगे तो शायद ना एप्लीकेबल, बट वहां पे भी करते हैं लोग. एग्जांपल देता हूँ. टेल मी अ डीप टेक स्टार्टअप जो कि साला बूटस्ट्रैप लो. नहीं होंगे यार, काफी सारे नहीं होंगे. क्यों? वो जाके फंडिंग उठाते, फंडिंग उठाते राइट. तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाने से पहले फंडिंग उठाते हैं. तो मतलब वो किसी को तो बेच आए हैं राइट. किसी को तो बेच आए ना. तो हमेशा पहले किसी को बेचो सबने, फिर बनाओ. बीट अ कस्टमर, बीट अ वीसी, बीट समवन एल्स, बीट योर फ्रेंड्स. रैंडमली सो के उठे और बनाने लग गए तो लाइफ अच्छी नहीं है यार. So you are now sharing sales principles. Clearly. मतलब यार Clearly you are a sales guy now. I'm a sales guy now. आई थिंक ये रियलाइज कर दिया कि जब तक अगर किसी चीज का पैसा नहीं आ रहा तो यार कुछ तो गलत कर दे. If given a chance on any day, would you like to code or do a sales pitch? ये तो धर्म संकट में डाल रहे हो. डिपेंड्स एक्चुअली. No, you have to choose one. नहीं. हाँ ऐसे ये इतना सिंपल नहीं होता ना. अगर तुम उनको हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो बहुत ही बोरिंग होगा. ठीक है. नहीं, of course I'm assuming कि you'll be having a good pitch to make and good. Let's assume कि कोई और भी कर सकता है उसको, but you are just given a chance. क्या इन दोनों में से तुम एक कुछ भी कर लो, impact remains the same. I think I would choose to code, and I'll give you a reason for it as well. Okay. Yeah, the way I sell is not through sales pitches. तो sales pitch मेरे लिए ऑप्शन नहीं है. Generally, I'm a very relationship guy. ठीक है. मैं जनरली सेल नहीं करता हूँ, मैं जनरली रिलेशनशिप्स बिल्ड करता हूँ. इफ यू वुड आस्क मी ऑप्शन बिटवीन कोड एंड रिलेशनशिप, तब मैं रिलेशनशिप चूज करूंगा. बट कोड और सेल्स पिच में तो बहुत सिंपल है. आई विल डेफिनेटली कोड. Got it. Cool यार. Love to see your techie spirit still alive. शुरू में तो मुझे लगा था मर गई है. But नहीं, जिंदा है. It's good to see. And I think that's it from my side for today. Thank you for your time. It was really lovely and so candid to have this conversation in typical Sachin style. So thank you for your time and all the fun we have. चलो, thanks Vaibhav. Thanks. I think I enjoyed more than you. काफी सारे आंसर्स मैंने खुद भी मतलब काफी कैंडिड हो गया, काफी ज्यादा ही.